Hi everyone, I hope you all are doing good. And so today we will be starting with determination of lease. So अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने डेफिनेटली सेल कंप्लीट कर लिया था, हमने मॉर्गेज भी कंप्लीट कर लिया था ना, फिर हमने लीज स्टार्ट किया था और लीज में पर्टिकुलरली हमने पिछले 2 क्लासेस में लीज का पूरा कंसेप्ट, राइट, लायबिलिटी सारे फिनिश ऑफ कर दिए हैं. ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विद सेक्शन 110. ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था, बट इसका एक नोट है जो मुझे आपको लिखवाना है, तो वो नोट हम लिख के आज हम लीव भी कंप्लीट कर देंगे. तो आज बेसिकली हमारा टीपीए का जो मेजर पोर्शन है, जितना इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं ऑलमोस्ट. एंड इसके बाद वाली जो क्लास होगी, अगर और भी कोई चीज बची होगी मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ. मॉर्गेज में जो कुछ प्रोविजंस, छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डेफिनेटली हमको एक बार उनको रीड तो करके जाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज वी कांट टेक एनी रिस्क, राइट. तो जो छोटे कुछ प्रोविजंस बचे हुए हैं हम वो कवर कर लेंगे. उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है जो टॉपिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हैं या इनको समझने में परेशानी आई होगी, हम उन टॉपिक्स को एक बार और देख लेंगे, ठीक है. So today we'll be finishing off with our lease part, and in the next class, which will be the last class of Transfer of Property Act, we'll be discussing all the residue sections and all those sections जो कि important है और उनका एक बार ढंग से revision होना important है, ठीक है. So in the next class we'll be basically completing the, and कल तक हमारा पूरा Transfer of Property Act complete हो जाएगा. So today we have to start with lease, right? We have to start with section 110 of lease. Yes. देखिए, तो जो सेक्शन 10 है, ठीक है, जो सेक्शन 10 है, सॉरी सेक्शन 110 है लीज का. ओके, सो इसमें क्वेश्चन क्या है कि लीज का जो टाइम है ना, कि जो लीज का टाइम है वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन सेक्शन 110 में पूछा गया है. तो उसके आंसर में क्या लिखा गया है? where the time limited by a lease of immovable property is expressed as commencing from a particular day. ठीक है, तो अगर कोई पर्टिकुलर डे बता रखा है, फॉर एग्जाम्पल 1 अगस्त 2023, अगर इस दिन से इसका लीज का टाइम बताया रखा है, इन कंप्यूटिंग दैट टाइम सच डे शैल बी एक्सक्लूडेड. मतलब इस टाइम को कंप्यूट करने के लिए ये वाला जो डेट है ना, अगर इस दिन से स्टार्ट हो रही है तो ये वाली डेट को एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है. तो अगर आपको केस स्टडी टाइप कभी आता है कि अगर इस डे से लीज स्टार्ट हो रही है तो कौन सा डे एक्सक्लूड किया जाएगा और कब से इसको माना जाएगा कि लीज स्टार्ट हुई है, तो ये डे जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा इसमें. ओके, such day shall be excluded where no day of commencement is named. ठीक है, जब कोई भी डे कमेंसमेंट के लिए नेम नहीं है कि कब से स्टार्ट हो रही है, देन व्हाट, द टाइम लिमिटेड बिगिन फ्रॉम द मेकिंग ऑफ लीज. अब इसको मैं नोट में आपको दूं तो बस इतना सा आप ध्यान रखना कि जब टाइम स्पेसिफाइड है, when the time is specified, then what, then the lease will start with the lease will start from the next day. बस इतना आप इसको कंसेप्चुअली याद रखिए, जो भी टाइम स्पेसिफाइड है उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी. इफ द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, if the time is not specified, ठीक है, टाइम नहीं दिया गया है, then what, then from the date of lease.
लीज डीड मतलब बेसिकली जिस दिन से जिस जो भी आपने लीज डीड बनाई होगी ना, तो उस लीज डीड में एक डेट तो दी होती है कि इस डे से लीज स्टार्ट होगी। तो जब टाइम स्टार्ट नहीं जब टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो जो भी टाइम विच इज मेंशन अंडर द लीज डीड, that time that day will be the day from when the lease will be considered to have commenced. Okay, now there's one also important thing in this. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरली कि अगर डीड में ऐसा ऑप्शन है, कैसा ऑप्शन है कि लीज कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम। मैंने पहले बताया था ना कि if there is any provision given in the contract, then that contract will prevail, okay, over any of the provisions of transfer of property act. ठीक है, we have been reading transfer of property act section 108, section 107, 106 में specifically in the last class we discussed that a notice period of 15 days is to be given where the lease is month to month, and a notice period of almost 6 months is to be given where the lease is of the is for the period of 1 year or year to year lease, right? So there we read about this notice period, fixed time of 6 months and 15 days. However, in that section also it was very clearly specified that nothing in this section shall be deemed to affect anything which is written in the contract. That means that the contract would prevail. So if, for example, in the contract it is given that only a notice period of 3 days will be given, then the notice period of 3 days will be taken into consideration, or the notice period of 15 days will be taken into consideration. Definitely 3 days wala period, because that is what is written in the contract. So if there's any contract which is done between the lessor and the lessee, and the contract specifies certain terms and conditions of the contract of the lease, then that contract will be prevailing over any of the provisions of the transfer of property act. Okay. So similarly, if it is written here that lease can be terminated anytime, if any such provisions given in the contract which is done between the parties, that lease can be terminated anytime. So such option can be exercised only by the lessee, else it would be void. ठीक है? What did we understand from this? That if there is any provision which says or which permits that the lease can be terminated anytime. So this clause, that lease can be terminated anytime, can be exercised only by the lessee. It means that the lessor cannot say to the lessee that from tomorrow you're not supposed to live in my house, or you're not supposed to be my lessee. Okay, this option can be exercised only by lessee, because it is considered. And why not from the option of lessor? Why? Because it is considered that protecting the rights of lessee or protecting the rights of tenant in such a situation or in such a condition is more important than protecting the rights of lessor. It is a kind of assumption, okay, that more wrong would be done to lessee by this way than as compared to the wrong done to the lessor. Because what will the lessor lose? Obviously he'll have to find a new tenant, okay. He might uh, lose some of the rent for that month or whatever, okay. But in case of lessee, we are assuming that he will, अपन तो ये assume करके चलते हैं ना कि he will just lose his home. Where will he go the next day, right? Or if he's doing some business on that lease property or land, so what will he do of his business? He cannot shut his business all of a sudden. He cannot shift his home all of a sudden. So we consider that the right of lessee, protecting the right of lessee in this scenario is more important than protecting the rights of the lessor. So if there is any provision which permits the parties, the lessor and the lessee, that these can be terminated at any time, then in such a situation, such option will only be exercised by the lessee. And if such option is also available to the lessor, then such a condition or contract will be void. You see the effect of it. Okay. So basically, there can be no such provision which permits a lessor to terminate the lease at any time on his whims and fancies. And if such a contract or agreement is there, it would be void.
Okay, so you can only make a provision on the option of lessee, where the option is that the lease can be terminated anytime. Such option can be exercised only by the lessee, else it would be void. Now this question is very important for your MCQ type objectives. Okay, why is it important? Because this has been asked previously in certain other examinations. And believe me, students, you know what? The examiners don't have so much of time to create questions from the books, to open the bare act and then to search for questions and then create questions. No. There are certain set of questions in every topic that are being asked and are important for every examination. So, for example, I'll give you my own personal example. So, yeah. So, if you are preparing for one single examination, okay, and that examination is a good examination of good level. You know, the question asked in that examination will be asked very, very deep or in-depth questions will be asked from it. And if you're properly preparing any subject, any topic, properly preparing, then you can use, your that study or that time will never get wasted. You'll be able to make use of your study in other examinations as well. Okay, so this is how we have been studying Transfer of Property Act, jurisprudence, and now we'll be studying the Limitation Act. So we have been studying each and every single line of the provisions, right? And other than studying the provisions, I have also been telling you what all questions are important for you other than these provisions. Okay, so if you study like this, you'll study and read each and every provision, each and every word of that provision. You'll understand each and every word and what it means. Then that will be helpful for you not only for this examination but for every other examination that you will be taking. Okay. So this question, so that is what I was saying, that no examiner sits, opens the bare act, and forms questions. There are certain set of questions which are important for every topic, and these are the particular set of questions which are being asked again and again in different examinations. What they'll do is they'll change the way of asking the question, but the question remains the same. The topic remains the same, the question remains the same. The only thing they'll do is that they'll change the way of asking the question. Okay, so just prepare that topic nicely, create your own set of questions, important questions, and that set of questions would be helpful, useful for you in all of the examinations. Correct. Now, so yeah, so remember this thing. Okay, lease can be terminated anytime, and only on the option of lessee, else it would be void. Now we'll be starting with what? Now we'll be starting with section 111, that is your determination of fees. Very important topic, बहुत important topic है for again many examinations, determination of fees. Now see, first of all you tell me what is the meaning of determination. So basically determination, this word means termination of fees. Now first of all, this question is important from index point of view. 111, in which section of determination of fees given? 111. ठीक है, firstly this. Then what? So there are certain 8 manners of termination of lease which is given under section 111. Okay, so now we'll be reading all of these provisions one by one. So first of all, a lease of immovable property determines by efflux of time limited thereby. इसका मतलब क्या होता है कि time, if the lease is for a particular period of time, for example the lease is for 6 months, so basically what will happen is that after 6 months the lease will get terminated. So if there is any contract, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम 6 महीने का लीज कर रहे हैं
तो 6 महीने बाद जो लीज है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है, इट विल गेट टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। तो फर्स्ट ये हो गया कि टाइम लिमिट जो है वो स्पेसिफाइड है, द टाइम लिमिट इज स्पेसिफाइड इफ्लेक्स ऑफ टाइम, ओके। सेकंड, where such time is limited conditionally, okay, conditionally what, on happening of some event by the happening of such event, okay, conditionally on happening of some event, यहाँ तक होगा ये, ठीक है। या where the time is limited conditionally on the happening of some event, इसका मतलब क्या बोला है उसने कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो बोले कि मेरा A is the lessor, B is the lessee, okay, and B says that I want your property on lease, and जब मेरा ये स्टॉक ऑफ 100 बैग्स मेरा ये स्टॉक आउट हो जाता है, मतलब पूरा स्टॉक बिक जाता है, ओके, तो मैं ये लीज ओवर हो जाएगी, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है। सो वे सच टाइम इज लिमिटेड कंडीशनली, तो उसने कंडीशन दे रखी है ऑन हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, कि ये इवेंट हो गया उसके बाद आई गो। या फिर आपने एक इंपॉर्टेंट केस ला पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी, देयर वाज अ पर्सन और एक घर था जहाँ से किंग की बोलते हम सवारी जाने वाली थी, ठीक है। तो दिस पर्सन ए उसने बी से ये किराए पे ये मकान ले लिया, टुक दिस फ्लैट ऑन रेंट, व्हाई, बिकॉज एक प्रोसेशन ऑफ किंग वाज अबाउट टू बी पास फ्रॉम दिस रोड, एंड जो कि वेरी क्लियरली इज विजिबल फ्रॉम दिस होम, ठीक है। बाकी वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, बाकी फैक्ट्स यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ये कंडीशन भी ली थी, क्या कंडीशन थी कि जब ये प्रोसेशन खत्म हो जाएगा मैं तब तक के लिए ले रहा हूँ, तो जब ये प्रोसेशन खत्म हो गया तो ये कंडीशन हो गई, तो लीज खत्म हो गई, ठीक है। या फिर ये 100 बैग जैसी बिक गए उसके, ये कंडीशन हो गई ओवर, तो लीज टर्मिनेट हो गई। वेल दिस वाज अ केस ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर बाद में ये इनकी आंखें सवारी निकली नहीं थी, ठीक है, उसने ये रेंट पे ले लिया, तो दैट विल नॉट डिस्कस इट, काफी टाइम लग जाएगा उसमें, दैट इज अनदर कंसेप्ट। तो where such time is limited conditionally on the happening of such event, कोई इवेंट उन्होंने फिक्स कर रखा है, एंड इस इवेंट के बेसिस पे उन्होंने कंडीशन लगा रखी है, ठीक है, बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, और अगर ऐसा इवेंट हो गया तो लीज हो गई टर्मिनेट, ओके। Where such time is limited conditionally on the happening of such event by happening of such event, ऐसा इवेंट हो गया, then what, सी पॉइंट क्या बोल रहा है, where the interest of the lessor in the property terminates on, मतलब लेसर का इंटरेस्ट कब टर्मिनेट हो रहा है, terminates on, terminates on, or his power to dispose of the same extends only to happening of an event by the happening of such event, ठीक है। अब ये क्या पॉइंट बोल रहा है, where the interest of the lessor, जहाँ पे लेसर का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में कैसे टर्मिनेट हो रहा है, और हिज पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, मतलब कि अगर कोई ऐसा इवेंट फिक्स्ड हो जिस इवेंट के होने पे उस लेसर का जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो सीज हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसका जो इंटरेस्ट है लेसर का इंटरेस्ट है, अच्छा लेसर है यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे लेसर है, where the interest of lesser in the property terminates on or is power to dispose of the same,